हेलो टेस्टर्स। ओके, सो टेस्ट एनजी के कुछ फीचर्स हैं जो हम लोग ये 2-3 सेशंस में देखेंगे। ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता एंड ग्रुप का यूज कैसे करते हैं, जैसे ग्रुपिंग करने हो टेस्ट केसेस को तो उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट एनजी फीचर, एज वेल एज डिपेंडेंसी फीचर को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। और पैरामीटराइजेशन, चलो ये सबको पता होता है, लेकिन कुछ 2-3 ऐसे फीचर्स है वो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होते हैं। सो वी आर प्लानिंग टू कवर अप दोस पार्ट, राइट? एंड वी वांट यू टू प्रैक्टिस इट, बिकॉज इसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको बेनिफिट होगा। सो आई एम क्रिएटिंग a new package. I'm creating a new package. Let's say the package name is module 1, and I'm creating another package that is module 2. अब पैकेज अलग अलग ना बनाओ तो भी चलेगा, बट आई एम क्रिएटिंग इट बिकॉज इन रियल टाइम यू विल बी डीलिंग विद अ वेबसाइट, एंड वेबसाइट में अलग अलग तरह के पैकेजेस होंगे, राइट? आपके मॉड्यूल्स होंगे तो डिफरेंट पैकेजेस होंगे। फाइन, दैट इज व्हाई आई एम क्रिएटिंग इट। तो फिर कोई भी सिचुएशन में ये हमारा जो आज हम वीडियो ले रहे हैं वो वर्क करेगा। सो कुछ कंपनीज में गाइस क्या होता है कि जितने भी टेस्ट केसेस होते हैं स्पेसिफिक मॉड्यूल के, वो लोग एक ही क्लास के अंदर क्रिएट करते हैं। सो देर आर टू डिफरेंट अप्रोचेस। अप्रोच वन, एक टेस्ट केस का है, आप एक सेपरेट क्लास क्रिएट करो और उसमें आप डीडीटी पैरामीटराइजेशन यूज करके उसको पॉजिटिव नेगेटिव डेटा को इंप्लीमेंट करो। So there will be one test case. I mean, the one test case that will contain multiple test cases with different set of test data. तो एक क्लास के अंदर आप मल्टीपल टेस्ट डेटा वाला एक प्रोग्राम एक लॉजिक के लिए लिख सकते हो, जैसे कि लॉगिन है या रजिस्ट्रेशन है। तो रजिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटीज के लेट से अगर देयर आर 80 पॉसिबिलिटीज दैट इंक्लूड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो आप एक ऐसा क्लास क्रिएट करो जिसमें 80 टेस्ट केसेस, मतलब 80 सेट ऑफ टेस्ट डेटा भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाए। So there will be only one @test annotation that will handle 80 different set of test data. And for that, we normally use data provider. Okay. So that is a different concept. But now what I'm saying is कि let's say अगर मैं यहाँ पे एक class create कर रहा हूँ, and that class name is user module. Okay, the class name is user module. Okay. Now, user module में let's say there are 5 functionalities, yeah, or 4 functionalities. One is sign up, second is sign in, third one is change password, fourth one is forget password, and fifth one is update address. So there are 5 functionalities. Okay. So जितनी भी functionalities है user module के अंदर, वो सब एक ही क्लास के अंदर उसको मेथड में रन करेंगे। Let's say public void sign up. Okay. Second is sign in, right? This is sign in. Change password. Let's say update profile, something. Yeah. And I think guys, let's change the theme. Theme change कर देते हैं. Let's change it white. Okay. So we created one class जिसमें 4 हमने methods लिए, and that individual method is actually a functionality, right? एक जो मेथड है जैसे साइन अप इज अ फंक्शनैलिटी, साइनिंग दैट इज अ फंक्शनैलिटी, तो हमने एक इंडिविजुअल टेस्ट केस बनाया है। ऑलराइट, सो कैन वी राइट डाउन, यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे @test टेस्ट एनजी लाइब्रेरी को पहले ऐड करना पड़ेगा।
All right. Okay. Sign up functionality, sign in. This is change password. All right. And this is update profile. Perfect. All right. So हमने 4 मेथड्स बनाई. एक्चुअली 4 मेथड्स मतलब 4 टेस्ट केसेस. Okay. Now ये एक टेस्ट केस है. Let's talk about this sign up. So sign up can have more than one possibilities, right? Because sign up जब हम फंक्शनैलिटी को टेस्ट करते हैं तो हम अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव डेटा से चेक करते हैं. So for that we need to use data provider. Okay. So we are not talking about it. Now what we are talking about is that is sign up, sign in, change password. Now what we can do, we can assign a specific group here. जैसे मुझे ऐसा करना है कि ये जो साइन अप है, साइन अप को मुझे स्मोक टेस्टिंग में इंक्लूड करना है, राइट. साइन इन को मुझे रिग्रेशन टेस्टिंग में इंक्लूड करना है, और चेंज पासवर्ड फंक्शनैलिटी को मुझे ऐड करना है सैनिटी में, और अपडेट प्रोफाइल को तीनों में रखना है. परफेक्ट. वो स्मोक में भी आ जाएगा, सैनिटी में भी. तो मुझे आई वांट टू क्रिएट 4 डिफरेंट ग्रुप्स, राइट. तो जो भी हमारे टेस्टिंग टाइप से अकॉर्डिंगली मुझे ग्रुप्स बनाने हैं. नाउ ग्रुप आप अपने बेसिस, अपने लाइक आप अपने स्क्रिप्ट के बेसिस पे बना सकते हो. कई लोग मॉड्यूल का ग्रुप बनाते हैं, कई लोग टेस्टिंग टाइप का ग्रुप बनाते हैं, राइट. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे ग्रुप बना रहे हो. यू कैन ऑल्सो क्रिएट मल्टीपल ग्रुप्स, राइट. एक एक पर्टिकुलर टेस्ट केस में मल्टीपल ग्रुप इंक्लूड, बिकॉज इट्स वन टू मैनी रिलेशनशिप, राइट. तो मैक्सिमम आप ग्रुप इसमें ऐड बना सकते हो. सो हाउ टू क्रिएट अ ग्रुप. तो यहां आपको राउंड ब्रैकेट करना है. राउंड ब्रैकेट में आपको लिखना है ग्रुप्स इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में you have to write the name of the group. That's it. So this is a syntax you need to understand. जो भी टेस्ट केस में आपको जो स्पेसिफिक ग्रुप असाइन करना हो, वहां ऊपर आपको राउंड ब्रैकेट में ग्रुप्स इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में डबल कोट के अंदर आपको वो ग्रुप का नेम लिखना है. फाइन. सो ये है स्मोक. चलो इसको मैं ले लेता हूं रिग्रेशन और एल सैनिटी. तो साइन अप जो है वो स्मोक टेस्टिंग के लिए, साइन इन दैट इज फॉर सैनिटी, दिस इज फॉर रिग्रेशन. परफेक्ट. और ये जो ग्रुप, दिस इज द टेस्ट केस अपडेट प्रोफाइल, जिसमें मुझे स्मोक को भी कंसीडर करना है, राइट. सो आप ऐसे मल्टीपल देना हो तो देखो यहां कॉमा करना है, देन सैनिटी कॉमा रिग्रेशन. You can also write it like this, right? You can also write it like this. So what we have done, हमने 4 टेस्ट केसेस बनाए एक क्लास के अंदर, हर एक को इंडिविजुअल ग्रुप दिया, और चौथे टेस्ट केस को तीनों ग्रुप दे दिए. फाइन. चलो इसको रन कैसे करते हैं, हाउ टू रन दिस. सो टेस्ट एनजी हम इंडिविजुअल क्लास को भी रन कर सकते हैं, राइट. ये पर्टिकुलर टेस्ट को रन कर सकते हैं. दूसरा बेनिफिट है कि हम इसको यूजुअली एक्सएमएल फाइल से रन करते हैं. सो आई क्रिएट वन एक्सएमएल फाइल. I'll create one XML. So XML file के लिए I will create a new package, and that package is test execution. Okay, and I'll create the XML file. Right click, new XML. So in order to create XML file, you can go to the specific location. Let's say test execution dot xml, right? This is my XML file. Okay, so let's create the tags. So first tag is suite name, right? Okay, so in a suite or suite, some people use this terminology. We can create test name. Perfect. Then, so in a test, we normally write classes
and in a classes we have a class, right? So this is our normal XML फॉर्मेट सिंटेक्स जो हम इसको ऐसे लिखते हैं और जो भी क्लास मुझे रन करना है सो दैट इज मॉड्यूल वन डॉट यूजर मॉड्यूल, राइट? So this is my test, I mean this is my class, this is my module name in which we have four different test cases. Fine. And the suite name is, I will give it, let's say final release, and I'll give the release name is 13.10.2025. This is a test is user module. Usually give the same name as the module name. And now group को कैसे define करोगे? तो अगर group को define करना है, so you have to enter after the test tag. और यहां पे आपको एक tag create करना है, that is called groups. ग्रुप्स। तो एक टैग हम बनाएंगे ग्रुप्स। ग्रुप्स टैग के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे रन, ओके? और रन टैग के अंदर वी विल राइट इंक्लूड नेम इज इक्वल टू स्मोक। परफेक्ट, दैट्स इट। सो अभी यहां पे आपने स्मोक लिखा, दैट मीन्स स्मोक वाले जितनी भी टेस्ट केसेस है, टेस्ट मेथड्स है, दे ऑल विल गेट एग्जीक्यूटेड। परफेक्ट। तो ये स्मोक से अगर मुझे रन करना है, सपोज ये एक्सएमएल फाइल में मैं अगर स्मोक की जगह पे सैनिटी कर दूं, तो सैनिटी के जो टेस्ट मेथड्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। मैं अगर वहां पे रिग्रेशन कर दूं तो रिग्रेशन के टेस्ट मेथड रन हो जाएंगे। मुझे ऐसा करना है कि स्मोक एंड रिग्रेशन को रन करना है, दैट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल, विल सी दैट। चलो ये पहले रन करके देखते हैं। राइट क्लिक, रन एज टेस्टएनजी सूट। सो it has executed sign up functionality, ये स्मोक है, एंड यूजर प्रोफाइल फंक्शनैलिटी, करेक्ट, ये दोनों स्मोक वाले हैं, राइट? ओके, लेट्स रन सैनिटी। सैनिटी रन करना हो तो so in XML you need to write sanity, okay? Right click, run as। so sanity में आएगा, one is sign in and user profile। sanity में sign in and user profile। so what it has printed, see sign in and you update profile, right? And agar aap, if you will call, right, regression, so regression में वो print करेगा, change password as well as update profile, see? So it is working. Now I want to run regression as well as smoke। मुझे स्मोक टेस्टिंग भी करना है और रिग्रेशन वाले टेस्ट मेथड को भी रन करना है। सो इट्स वेरी सिंपल, यू कैन कॉपी एंड यू कैन पेस्ट इट। सो जितने भी आपके लाइक ग्रुप्स है वो आप यहां पे ऐसे इंक्लूड में मेंशन कर दो। एंड नाउ व्हेन यू रन दिस, so you can see that it has printed change password functionality, sign up। change password guys किसके लिए है? change password is for smoke, right? regression के लिए sign up, right? and this is update profile, उसने रन किया। so basically if you want to run any kind of groups, आपको compulsorily XML create करना पड़ेगा। you need to create the XML। all right, okay, now let's say you might have a question, let's say if you have more than one classes, जैसे मेरे एक और मॉड्यूल है, so in module 2 I am having, let's say, category management, right? and we have public void create category @test,
All right. So this is create category, update category. This is delete category. And this is view category. Okay. Now let's say create category is groups is equal to in curly bracket double quote smoke. Perfect. Edit is a sanity. This is regression. So, and over here, that is smoke, sanity, regression. All right. Now, so let's say in this XML, what I need to do, this is my class and ये class में I want to actually it is executing this smoke. अभी चलो मैं smoke को ही run कर रहा हूँ, right? तो ये user module को ही run कर रहा है. So now I need to mention class name is equal to module2 dot category management, right? Make sure uppercase and lowercase, guys, because if it is not proper, your code won't be executed. Category management. Done? So now when you run this particular XML file, so what exactly TestNG will do? TestNG will find all the smoke quali methods in both the classes and will be executed. Right? So अगर मैं इसको run कर रहा हूं, so आप देखोगे यहाँ पे sign up functionality, update profile, create category, view category. तो ये जो दो है, this is basically these are from second one, I mean category management, and ये जो first two उसने print किया, two methods run की, that is from user module. Okay, so if you want to use like groups in your test case, दिस इज द easiest way. ओके, आप ऐसे ग्रुप क्रिएट कर सकते हो और ग्रुप क्रिएट करने के बाद आपको ऐसे एक्सएमएल फाइल में उसको टेस्ट टैग के बाद ग्रुप्स के अंदर रन के अंदर इंक्लूड, दैट्स इट. तो जो आप इंक्लूड में दोगे अकॉर्डिंगली दोज मेथड्स विल बी एग्जीक्यूटेड. परफेक्ट. सो गाइस एक बार ये ट्राई कर लेना एंड जस्ट लेट मी नो कि ये कैसे वर्क हो रहा है. परफेक्ट. नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू इंप्लीमेंट डिपेंडेंसी फीचर इन टेस्टएनजी. राइट. थैंक यू.